Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. When people see something complete or a model in front of them, it is easier for them to copy. So people copy dress, hairstyles, people copy houses, interior design and things. That's whole of the idea of marketing and advertisement agencies, that they give you a kind of a model that you want to have that. If you have this, you'll feel like this. So imagine if a car, they actually are promoting, the car is in front of you but in raw form. The plastic is in raw form, the metal is in raw form, copper is in raw form, color is in raw form. That wouldn't attract anyone as such actually. But when the car comes into existence in the form of car, then people think, yeah, I want this or I don't want this, etc., etc. Similar case is the human personality, that if it is in raw form in the Quran, it is in theory form. So people can't see that how a complete picture looks, how a model looks. So Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet alayhi salatu wasalam so that a full, perfect manifestation of that theory and that raw material can be in front of people. So they can copy, and people did copy. And then through the generations, then actually it came. But then, now the Prophet ﷺ passed away temporarily from this temporal world, but his teachings remain, but they are in theory as well. So now a miniature model always will exist in the form of awliya Allah, because they are like a miniature models of the sunnah. That's what they are supposed to be. If someone is not, they are not closer to Allah subhanahu wa ta'ala or the Prophet alayhi salatu wasalam. They are closer to whoever they are representing, whoever they are actually following and copying, etc., etc. So obviously that's a very high standard. But now for us actually, the mashayikh, they have given a picture. Obviously it is from the light of the Prophet ﷺ, but so that's something which we can follow, that how a believer should look and act and feel, and what's their character, how a believer, ideal Muslim, how they should be actually in sense. So we mentioned there about one of the Shayukh has mentioned this 40 or more or less points actually, that we can see that how that's what we are aiming for, that's what the complete picture is. तो जब कोई चीज़ भी सामने होती है इंसान के, तो इंसान के लिए उसकी नकल करना आसान हो जाती है. मसलन मैं ये गाड़ी चाहता हूँ, मैं ये मकान चाहता हूँ, मैं ये कपड़े चाहता हूँ, लेकिन अगर कपड़ा जो है वो कपास की शक्ल में हो, धागे की शक्ल में हो, तो वो बंदे को ज़्यादा दिलचस्पी उसको उधर नहीं होती. लेकिन जब कपड़ा बुन दिया जाए तो वो कलर पसंद आ जाता है. गाड़ी अगर लोहे की शक्ल में है तो वो नहीं. तो वो एक मिसाल नमूना सामने हो तो इंसान को पसंद आता है. तो कुरान मजीद में तो वो थ्योरी है, यानी लिखा गया है, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर एक अमली नमूना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल मुबारक में भेजा. अब वो उस नमूने के और उस उसवा की भी जो तालीमात है वो अब थ्योरी में आ गई, सुन्नत में आ गई. तो अमली सामने इंसानों के क्या फिर होगा, तो वो औलिया अल्लाह हैं, सहाबा, ताबीन, औलिया, क़यामत तक, इमाम महदी तक आने तक वो रहेंगे. तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ही
नमूना बनने की कोशिश कर, वही उसी को वली कहते हैं कि जो उनके पीछे चलने, उनसे मोहब्बत, उनकी तबाह करने की मिसाल बनने की कोशिश करे या करीब हो। जितना कोई करीब है उतना हुई अल्लाह के करीब भी है। इत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो हमारे लिए मुश्किल होता है समझना। तो शाज़लिया में से एक शेख ने जिस तरह एक मोमिन को होना चाहिए, कम अज़ कम जो अल्लाह पाक को जो पसंद है, जिसकी उसकी तबीयत, शख्सियत, तो वो उस बात उन्होंने बयान किया है 40 नुकात में, 40 नुक्ते जो है, तो वो हम भी चले सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें उस तरह बनने की चलो कोशिश कर, जो हमारे सामने एक पूरी पिक्चर तो आ जाएगी, नमूना। वी विल हैव अ मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस। सो वी मेंशन्ड 2 पॉइंट्स लास्ट टाइम। 2 पॉइंट हमने पिछली दफ़ा बयान किए थे, इस दफ़ा भी एक कर लेंगे या 2। तो पहली तो उन्होंने बयान की कि मोमिन यानी खूबसूरत है वो इंसान, beautiful characteristic is the human being and the Muslim जिसकी मौजूदगी सुकून दे। ये पहला था कि जिसका किसी जगह मौजूद होना, his presence somewhere radiates peace to people. That if you are present somewhere, let's say in family, in work, in any place, you radiate light of peace. People feel peaceful, they feel tranquility because of your presence. But if they feel uncomfortable, then, and I mentioned last time, this is due to the inner heart, the beautiful heart, the radiant, the light in the heart. So obviously we are talking about a very watered down actually version, but obviously the perfect version is the Prophet ﷺ. So if you will hear about him, you will see wherever he was, he brought peace, tranquility, and their light and enlightenment. ये first point था. Second is that speaking, silence, this is human beings, actually one of the characteristics we speak. तो उसका क्या हो, खामोश हो तो दूसरे सुनने की चाहत रखें. That is the personality. That if you are silent, people, family, people who are around you, they desire you to speak. They want to hear from you. They want you to speak. यानी अगर वो लोग बंदे चाहते हैं कुछ सुनना, so this means that he is mostly silent. This quality comes when you are mostly silent. If you are a frequent speaker, you just speak out your mind and whatever all the time, people would not like to listen to you. They would like to you to, they will have the desire that you be silent. You won't have the desire for you to speak. So one should assess that, am I that kind of person that people want me to speak or people want me to actually be quiet? If that is the case, then try to speak less but speak good. Meaning the words are chosen, like you choose your shoes, you choose your food, I like this, I don't like this. You choose your clothes, you choose your spouses, you choose, people choose things, actually even small decoration piece. Why not to choose your word? But hardly we choose our word, the words come out and then we know what come out. That's not choice. That's not an informed choice. तो यानी लफ्ज़ पहले आप खुद मुंतखब करें, ये लफ्ज़ मैंने बोलने हैं, अल्फाज का चुनाव खुद करें. हमें चुनने की बजाय वो बाहर निकल आते हैं, फिर हमें पता चलता है क्या निकला है. यानी मुंह से अल्फाज बाहर निकल आते हैं तो फिर हमें पता चलता है क्या निकला है. ओहो, ये तो मैंने नहीं कहना था. ठीक है, इंसान है, कभी गलती भी हो जाती है, लेकिन वो अपना majority of the time it shouldn't be his nature. It shouldn't be. So he should think, जिस तरह चीज़ें चुनता है, कपड़े, ये वो, दाढ़ी, क्रीम, वो साबुन, शैम्पू तक लोग चुनते हैं.
पेपर, टॉयलेट टिश्यू भी चुनते हैं हम। तो अल्फाज जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के अंदर, ज़ुबान, वर्ड्स, तो उसको भी नहीं चुने। They don't want to actually say. The Prophet Islam chose the words. आपकी ये सुन्नत थी कि आप अल्फाज को जो है इतना चुनते थे कि सुनने वाले को भी महसूस होता कि वो गिन सकता है। चले हम उस लेवल को तो नहीं लिए, but actually try at least to choose words before you speak. The Prophet Islam did this so that people who were hearing him, they also felt that they can choose those words, meaning they can differentiate and they can count those words. Others, listeners, they could count. हमारा ये आलम अपने नहीं गिन सकते क्या कहा. And our state, if that is that we can't count ourselves, what we are speaking. तो जिस तरह पैसे खर्च करता है बंदा कॉन्शियसली कि मस्जिद में देने हैं, अल्लाह की राह में देने हैं, 5 पाउंड का नोट देना है कि 10 का, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि you choose what you actually speak, because that's actually be written down and you are then bound by it. Actually it can destroy you, make you or break you. It's very, very important. तो ऐसे नहीं बात, without thinking, choosing, इंतखाब करें, चूज़ करें कि क्या बोलना है, वो अल्फाज चुन के रखे। जिस तरह बैंक में पैसे हम रखते हैं, जिस तरह ड्रॉ में कपड़े रखते हैं, चूज़ करते हैं हमने क्या पहनना है, इस तरह अल्फाज का भी एक खूबसूरत ड्रॉ बनाएं। मेक अ कबर्ड, मेक अ ड्रॉ ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एज वेल फॉर यू। लिखे तो हूँ, अंदर हूँ, सो दैट यू नो व्हाट टू से। तो जो गलती हो गई, ये हो गया, तलाक हो गई, गाली हो गई, दे हैव नॉट चोजन, वो एनी rubbish they pick up from here, there, and they actually throw at other people. They got no choice spectrum. So just like in your wardrobe, their clothes, in the shoe rack, their shoes, and you choose. Similarly, prepare a room or a drawer which actually you have a choice of words and sentences, and then you can choose from there. And you can have a treasure of those from the prophetic actually sayings, meaning Prophet ﷺ's words are, and his blessed utterances are saved, so one can have them. And you are not a prophet, but you can use prophetic words. What a blessing! कि हम और आप वली भी नहीं, नबी तो अब ख़त्म नबूवत हो नहीं, नबी तो हो, लेकिन हम हज़ूर अलैहिस्सलाम एक इमाम उल अंबिया के अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं, नकल कर सकते हैं। तो ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। حسنت جميع خصاله صلوا